Hi, good morning everyone. Today in this video we will discuss our chapter Inside Our Earth, class 7 Geography. Okay, now we will discuss our exercise, our question answers and the main definitions of this chapter. Okay beta, so now let's start. First we will do with the glossary. First definition is igneous. Okay, so now igneous, sedimentary and metamorphics. Beta, these three are the types of rocks that are found inside our earth. Okay, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, so igneous means Latin word ignis means fire. Okay, the rocks, it means that igneous rocks are those kind of rocks in which the capacity or the elements of fire are found. Okay beta, now sedimentary, Latin word sedimentum meaning settle down, like the rocks which are easily settle down and have the particles of settling down in nature, कि जो rocks, जो पत्थर बिल्कुल आसानी से सतह पे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. ओके, नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स, द ग्रीक वर्ड metamorphose means change of the forms, like the rocks which have the capacity or the particles of changing in nature, जो अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में जल्दी से बदलाव कर लेते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं. दीज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. Now the fossils, the remain of the dead plants and animals trapped in the layer of rocks are called fossils. Okay beta, so this we all know that, like the remain of dead plants and animals, suppose all the plants की जो plants रूखे सूखे हो जाते हैं, उनकी पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती हैं, उनके स्टेम गिरने लग जाते हैं, उनकी ब्रांचेस टूट के नीचे गिरने लग जाती हैं. So like, and the same happens with the animals, the dead body of animals, and they both together trapped in the layer of rocks, एंड वो फिर एक धरती की परत के जाल में आ जाते हैं, और धरती फिर समय के साथ साथ वो उनके ऊपर मिट्टी की लेयर बनती चली जाती है. वो लेयर बनने के बाद वो धीरे धीरे धरती के अंदर अपने आप दबने लग जाते हैं. विद द राइज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, एंड थस आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स they give us in the form of rocks, in the form of coal. Okay, now we will come to the tick the correct answers. Okay, this is your second question. The rock which is made up of molten magma. Okay beta, the rock which is made up of molten magma. Options are igneous, sedimentary, metamorphic. Okay, so molten means a kind of heat, a kind of fire, and fire जहाँ मिलती है वो कौन से रॉक्स होते हैं? आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर 1 मिनट, द फायर कंसिस्टिंग रॉक्स आर द igneous rocks. Okay, igneous rocks, so answer will be igneous. The innermost layer of the earth is core. As we all know that crust is the topmost layer, core is the innermost layer, and mantle is the last layer of the earth. So core is the correct answer. Now C part, gold, petroleum and coal are example of rock, minerals and fossils. So gold, petroleum and coal are the examples of rock, because rock, minerals, fossils. Okay, fossils, the remain of dead plants and animals. Okay, now minerals are something else, and so gold, petroleum and rock are the example of rock. Okay beta, because gold भी ज़्यादातर गोल्ड कहाँ पाया जाता है? चट्टानों से मिलता है बेटा. ठीक है, जहाँ पे गोल्ड माइंस होती है ना वहाँ पे. ठीक है, एंड गोल्ड माइंस कहाँ सिचुएटेड होती हैं? इन दी लैंड रीजन ऑफ माउंटेन्स. ओके,
And same with the coal and petroleum. Coal mines are also situated inside the mountain regions, or we can say inside the mountains. Okay, now rock, D part, rock which contains fossils are sedimentary rocks, metamorphic rocks, and igneous rocks. Okay, now the thinnest layer of the earth is called the crust. The thinnest layer of the earth is called the crust. Mental core, answer will be crust. Answer will be crust. Okay, now we will do match of the following. In match of the following, core is the innermost layer beta. Core is the innermost layer. Minerals has definite chemical properties. Mineral has definite chemical properties. Rocks used for road and buildings. Rocks used for road and buildings. Clay change into the slate. Clay change into the slate. Cell made up of silicon and aluminium. Cell made up of silicon and aluminium. Clay change into this state. Rocks used for road and buildings. Minerals has definite chemical properties. Core is the innermost layer. So students, I left this part, sorry for that. Rocks which contain fossils are A. Sedimentary, B. Metamorphic, C. Igneous. So beta the right answer of this question will be sedimentary rocks. फॉसिल फ्यूल्स कहाँ मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं. ठीक है, सो आंसर विल बी सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, नाउ द एक्सरसाइज इज see this diagram beta. Okay, this is the diagram of the earth, and let me explain you this diagram before we come to the question answers and give you a brief descriptions of what is inside in our earth. So beta, the green part you are seeing is the land. Okay, ये क्या green part क्या है? Land है, land area कि जहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन है. And the blue part you are seeing inside the earth is the water area. Okay, all the blue shading area showing the region that consists of water. Okay बेटा, जो हरा रीजन है वो ज़मीन को दिखा रहा है, जो नीला रीजन है वो पानी को दिखा रहा है. ओके, नाउ एंड दी आउटर सर्कल. ओके, ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, द लास्ट लेयर ऑफ द सर्कल बेटा. This is the topmost layer of the earth and it is called as the crust. Okay, what it is called? It is called crust. Okay बेटा, ये क्या कहलाती है? It is called crust. Now this is a lithosphere. Okay, this is lithosphere. This is mantle. Okay, now this is outer core. This is outer core, and this is inner core, and this is core. Okay, this layer. Okay, this layer is core and this is mantle boundary. Okay, so now let's come to our question answers, chapter number 2, inside our earth. Okay beta, so first question is, what are the 3 layers of earth? Beta, we all know that I told you earlier also, there are 3 layer of earth. First is crust, the topmost layer, mantle, the middle part of the earth, core is the last layer of the earth. Okay, now second question, what is rock? Any natural mass of minerals, matter that makes up the earth crust is called a rock. Okay beta, so what is a rock? Any natural mass, एक बहुत बड़ा mass here means beta weight. Okay, weight, mass is representing here weight. Any natural mass of minerals, matters that makes up the earth crust is called a rock. Is called a rock. Yes, now name the 3 types of rock. I told you beta earlier also, we have 3 kinds of rocks inside our earth. First is the igneous rocks that emits, that have the properties of fire. Sedimentary rocks,
These rocks have the properties of fossils and they trapped fossils inside them. And third is the metamorphic rocks. The rocks having the properties of changing in nature. Okay, so these are the three kinds of rocks we have. So now this is an important question. How are extrusive and intrusive rocks formed? Okay beta, so mark it important. This is an important question of this chapter. Extrusive rocks and intrusive rocks कैसे बनते हैं, ठीक है. So first we will discuss about extrusive rocks. When the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. For example, basalt. Okay, beta. When the molten lava comes on the earth's surface, suppose एक वोल्केनो इरप्ट हुआ बेटा. वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके साथ लावा भी बाहर निकलता है ना चट्टान से. जब एक चट्टान के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इतनी ज़्यादा गर्मी बन जाती है कि डेट वो अपने अंदर हीट को कंट्रोल नहीं कर पाता है. सो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर एंड with the rise of pressure, the heat comes up with a spark, with a blast outside from the mountain, and with it lava comes out on the earth surface. It rapidly cools down and become solid. So जैसे ही वो लावा चट्टान से बाहर निकल के पृथ्वी पे गिरता है, वो बहुत ज़्यादा हीट का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी की लपटें होती हैं, आग होती है. बट धीरे धीरे वक्त मतलब जैसे ठंडी हवाएं चलती है, टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो ठीक है वो टाइम के साथ वो सेटल डाउन हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है. और ठंडा होने के बाद वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. ओके, क्या बन जाता है, सॉलिड. सो रॉक formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. ऐसी चट्टानें जो कि आग से निकले हुए लावा के ठंडे होने के बाद बनती हैं, जिनमें आग की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं चट्टानों में, उन्हें क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स. सो बेटा वी कैन से इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस from the molten lava that came outside from a volcano in the form of solid, and after settling down and cooling down the lava becomes solid and thus it forms the igneous rocks on the earth surface. For example, basalt. Okay beta. Now intrusive rocks. Sometimes the molten magma cools down inside the earth crust. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. For example, granite. बेटा कभी कभी जब वोल्केनो इरप्ट होती है, सो सम ऑफ द लावा गेट्स रिमेन्स इनसाइड द वोल्केनो ओनली बिकॉज उसको इतना ज़्यादा तापमान और इसको ज़्यादा इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है कि वो उसको अंदर बूस्टअप करे बाहर निकलने के लिए. वो एनर्जी, वो एफिशिएंसी, वो स्पीड नहीं मिल पाती है और वो इसी कारणवश वो अंदर ही रह जाता है. सो इट रिमेन इनसाइड इन द हाउस एंड that is because it lays on the inside and thus forming igneous rocks. For example, granite. Okay, for example, granite. Now this is a question, what are the uses of rocks? Okay, so we will discuss the uses of rock. The hard rocks are used for making building houses. They are also used for making roads. Rocks are also used for playing games. Example, 7-stone pittu, hopscotch, scrapple, kit and 5-stone gitti. Okay beta, so these are the uses of rocks. Okay, and now this is an last question of this chapter. What do you mean by rock cycle? Okay, I shall explain you with the help of a diagram. Now, when any type of rock changes to another type under certain conditions in a cycle manner, this process of transformation of rock from one to another is known as the rock cycle. For example, clay changes into slate,
लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। ठीक है बेटा, कि एक चीज से, एक पत्थर से दूसरा पत्थर बनने की प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहा जाता है, और अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड सर्टेन cycle. Okay, now this is the diagram. See, we have here metamorphic rocks, the rocks which have the properties of settling down in nature. यहाँ से मैग्मा, सी ये क्या है, एक चट्टान है, ये वोल्केनो इरप्ट हो रही है और लावा बाहर निकल रहा है। एक तरफ तो बेटा क्या बन गया, इग्नियस रॉक्स बन गए। इग्नियस रॉक से क्या बन गए, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। फिर इनको कट डाउन कर दिया, इनको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमें क्या मिले, सेडिमेंट्स मिल गए, और सेडिमेंट्स के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स बना लिए, और फिर ये साइकिल बेटा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू।